Good morning, good afternoon, students. We are discussing chapter number 6 of your geography book. The name of the chapter is population, and we discussed in our previous classes about the population, its size, distribution, about the census. This all topic discussed already in our previous classes. Yes. Today we are going to start this chapter with the topic literacy rates. Literacy rates we have to discuss today. Yes. So student, what do you understand by literate person or literacy rate? What do you understand by literate? Who is literate? So according to the census 2011, the definition given in census 2011, a person who attained the age of 7 years or more and who can easily read, write, understand any language, then he or she is treated as लिटरेट। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसने 7 से अबाउ उसका एज है और वो कोई भी एक लैंग्वेज एनी वन लैंग्वेज वो इजीली रीड राइट और अंडरस्टैंड कर सकता है तो वो किसमें कंसीडर होगा लिटरेट में इज लिटरेट पर्सन। नाउ yes, now students, we can think that what will be the conditions if the literacy rate is low. तो literacy rate low होगा, in that case economic development या economic improvement भी country में कैसा होगा, low रहेगा, because low level of literacy rates are serious obstacle for economic improvement. So students, there has been a steady improvement in literacy level in India. You can see that the literacy rate in the country as per the census or according to the census 2011 is 73%. 73% is the literacy rate of India according to the census of 2011, out of which 80.9% of the total literacy rate are male literacy rate, and 64.6 of the total literacy rate is फीमेल वन. सो वाई डू सच ए डिफरेंस एग्जिस्ट? ये ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो हमने ये यस्टरडे की क्लास सेक्स रेशियो में पढ़ा था that people even today people prefer to give education to son instead of daughter. कि अभी भी क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लिटरेसी के रिगार्डिंग. अभी भी रूरल एरियाज में, कुछ बैकवर्ड एरियाज के अंदर लोग जो हैं वो किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो सन की एजुकेशन के टूवर्ड्स ज्यादा सीरियस है एक्सेप्ट फीमेल वन. तो ये इस तरह से जो है आपका literacy rate is that literacy is a very important quality of population. Now the next topic is occupational structure. What do you understand by occupational structure? So students, we discuss the population in terms of age composition, कि age composition के according कितने age group के पर्सन टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, ये हमने डिस्कस किया था. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हियर मींस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या मतलब है कि we all know about the some of the economic activity like primary activity, secondary activity and tertiary activity. So अगर हम population को अब study करते हैं या population को divide करते हैं according to the people working in different economic activities, कि कितने लोग टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहा है, टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट आपका सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर वर्क कर रहा है, और टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट आपका tertiary activities के अंदर काम कर रहा है. That is the occupational structure. Now we can read the NCERT that the percentage of population that is economically active is an important index of development. The distribution of population, that is the definition, the distribution of population to different types of occupation is referred to as the occupational structure. ये कौन-कौन से सेक्टर के अंदर कितनी-कितनी population involved है, that is the occupational composition or occupational structure of the population.
population. Okay, now you can see there is an enormous variety of occupation found in our country. We all know that is primary activities, secondary activity, or tertiary activity. Primary activity are those activities in which the product is obtained from the nature, that is agriculture. Agriculture is a part of primary activity. Secondary activity are the industrial sector, like where there is a processing. And the last one, that is tertiary activity, is related to the service sector. जो आपका किससे related है? Service sector से related है. That one is tertiary sector. So let's have a look of our population composition in different occupational structure. Population का composition अगर हम देखते हैं different structure के अंदर, now you can see 64% of the population is engaged in involved in agriculture. That is a primary activity. Secondary activity, if I'm talking about secondary activity, you can see secondary activity का आप देख सकते हैं that 13% of the population is working in secondary activity and the remaining 20% of the population is working in tertiary activity. So this is the occupational structure of the population of India. Primary activity, as we already discussed, it includes the agriculture, animal husbandry. The concept is that primary activity involves where the product is directly get by the nature से जब हम get करते हैं, that is primary activity. Second one, that is secondary activity, involves manufacturing, processing. So all the industrial sector working, construction works are included in secondary activity. And the last one, that is tertiary activity, which is also known as service sector. Tertiary activity includes transport, communication, commerce, administration, where there is no production, where there is प्रोडक्शन नहीं होता है, केवल एक्सचेंज ऑफ क्या होती है, सर्विस दी जाती है. ओनली देयर इज अ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस. Now student, the next one, that is health. Next topic is health. That what do you understand by health? So health is an important component of population composition. जो developed nation होंगे, those developed nation having very good health facilities are available. जब good health facilities available होगी तो क्या होगा, good health facilities होगी तो इससे जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी. एक पर्सन अपने लाइफ टाइम में क्या कर पाएगा, ज्यादा सरवाइव कर पाएगा, लिव कर पाएगा. और हेल्थ फैसिलिटीज अगर पुअर होगी तो डिजीजेस की अगर मान लीजिए क्योरिंग नहीं है, डायग्नोसिस नहीं है, इन दैट केस क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस कंट्री का क्या होगा, लो होगा. सो हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन. नाउ यू कैन सी, अच्छा, जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज जो है ज्यादा इंप्रूव्ड है, ज्यादा अच्छे वे में है, तो वहां पे क्या होगा, डेथ रेट्स क्या होगी, कम होगी. देयर द डेथ रेट्स आर लो, डेथ रेट्स कम हो जाएगी. हेल्थ फैसिलिटी इज गुड, देन डेथ रेट्स आर लो. सो नाउ यू कैन सी दैट इन अ ईयर 1951 death rates have declined from 25 per 1000 population. जहां पे 1951 ईयर में 1000 आउट ऑफ द 1000 population 25% जो है डेथ हो जाती थी, वो आपकी 7.2 पर 1000 पर्सन जो है रेट आ गई है. कहां पे, 2011 में. ऑल्सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अ पर्सन सर्वाइव इन हिज लाइफ पीरियड, तो कितने एज तक सर्वाइव करता है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बर्थ पे थी वो आपकी 36.7 ईयर्स 1951 में. अगर हम देखें कि एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखे थे इंडिया का, तो वो आपका कितना था, 36.7 ईयर्स, जो अब इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 67.9 ईयर्स इन 2011. तो यहाँ पे ये चेंज कैसे आया, दैट इज ओनली ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ फैसिलिटीज, ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट, ड्यू टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द हेल्थ सेक्टर. तो उसकी वजह से ये आपका चेंज आया है. ओके स्टूडेंट्स, okay students, now the substantial improvement is the result of many factor including improvement. अब देखिए ये जो change आया, the change of the life expectancy from 36.7 years in 1951 to 67.9 years in 2012. That change is, what are the factors responsible for these changes? So there are many factors like improvement in public health, prevention of infectious diseases and application of modern medical practices in diagnosis. what do you understand by diagnosis? कोई भी डिजीज अगर किसी के साथ भी हेल्थ इश्यू है, सिम्टम्स है, अगर मान लीजिए, तो क्या है, अगर उसका डायग्नोस टाइम पे हो जाएगा तो वो डिजीज
भी बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका क्या है, ट्रीटमेंट होने से, आपका इंप्रूवमेंट होने से, दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीज्ड इन इंडिया फ्रॉम 1951 to 2012. Now, despite considerable achievements, the health situation is a matter of major concern for India. The per capita calorie consumption is much below the recommended level and malnutrition. So student, still there is a great work to do in India. यहाँ पे जो nutritional level जितना मिलना चाहिए, what nutritional level is needed is not provided. तो जितना nutritional level हमें मिलना चाहिए survival के, उतना हमें नहीं मिल पाता. और जब nutrition proper नहीं होगा, then the people are affected by the problem of malnutrition. Malnutrition means there is a deficiency of nutrition. There is no proper nutrition among the population. Other than this, safe drinking water and basic sanitation amenities are available to only 1/3 of the rural population. So if I'm talking about the rural infrastructure, then you can see the basic amenities, sanitations, facilities, safe drinking water are only available to 1/3 of the total rural population. So there is a lots of work to do. These problems need to be tackled through an appropriate population policy. Now the next topic, that is adolescent population. तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन में कौन कंसीडर होते हैं, कौन सा एज ग्रुप इज अ पार्ट, विच एज ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ एडोलेसेंट पॉपुलेशन, और विच एज ग्रुप इज नोन एज एडोलेसेंट पॉपुलेशन. So students, the age group of 10 to 19 years is considered as adolescent population. The age group of 10 to 19 years is known as adolescent population. So the most significant feature of the Indian population is size of its adolescent population, because in India the adolescent population constitute 1/5 of the total population of India. Abhi 1/5 of total population, a major portion of the population is adolescent population, or the age group of the people who are under the age group of 10 to 19 years. So adolescent, if I'm talking about adolescent population, तो adolescent population का nutritional requirement is high. The nutritional requirement for the adolescent population are higher than the normal child or adult. Why so? Because that time is the growing time period. ये क्या है? Growing time period है. So poor nutrition अगर होगा तो क्या हो जाएगी, body के अंदर deficiencies हो जाएगी बहुत सारे elements की. So the diet available in India to adolescent is inadequate in all nutrients. Inadequate means insufficient. जो पूरी तरह से रिक्वायरमेंट जितने की है उतनी रिक्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, उतना प्रोवाइड नहीं हो रहा है. So that is the main problem. So a large number of adolescent girls suffer from anemia. So anemia is a disease. इसके अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, ब्लड लेवल जो होता है क्या हो जाता है, कम. So their problem has so far not received adequate attention in the process of development. So adolescent girls have to be sensitized to the problems they confront. Awareness among them is improved through the spread of literacy and education. तो हम ये awareness कैसे लेके आएंगे उन girls के अंदर, by providing them a proper education, by providing them literacy. Now the next one, that is NPP, that is National Population Policy, that formulated in the year 2000. So that population policy formulated for the proper management of the population को properly manage करने के लिए, इसके अलावा family planning बनाने के लिए, उसके अलावा और भी बहुत सारे इसके related objectives थे कि literacy level को कैसे increase करें, health facilities को और अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज को कैसे इंप्रूव करें. तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. सो एनपीपी जो आपका था वो आपका किसने इनिशिएट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड दिस. पहले तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था, व्हेन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड सो इन 1952. तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था वो क्या था कि एक रिस्पॉन्सिबल और प्लान पेरेंटहुड को क्या करना था, गाइडलाइंस देनी थी वॉलेंट्री बेसिस पे. तो यहाँ कोई कंपल्शन नहीं था, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, गाइडलाइंस देने के, ठीक है ये बच्चों का न्यूट्रिशनल लेवल होना चाहिए, फैमिली को इस तरह से मेंटेन रखना चाहिए. बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए आपका रहता है ओके
So NPP, what are the objectives of the NPP, that is National Population Policy 2000? तो देखिए सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो था imparting free and compulsory school education up to 14 years of age, कि एटलीस्ट 14 years of age के अंदर क्या मिले सभी को, एजुकेशन जो है फ्री एजुकेशन मिले, और एजुकेशन मिले जिससे हमारे इंडिया का लिटरेसी लेवल क्या हो, इम्प्रूव। नेक्स्ट वन दैट इज रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मींस जो बोर्न चाइल्ड होते हैं, न्यू बोर्न चाइल्ड होते हैं, दैट आर इन्फेंट्स। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस जो इन्फेंट्स, जो बिल्कुल न्यू बोर्न बेबीज के अंदर जो डेथ रेट है उसको क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है, और उसे 30 पर 1000 लिव बर्थ के क्या लाना है, नीचे बिलो लेके आना है। तो ये सेकंड टारगेट था, ऑब्जेक्टिव था एनपीपी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। नेक्स्ट वन दैट इज अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। तो ऐसी डिजीजेस दैट आर प्रिवेंटेड बाय मींस ऑफ वैक्सीनेशन, सो वो वैक्सीनेशन क्या है, सभी चिल्ड्रंस को क्या हो, प्रोवाइड किए जाए, जिससे क्या है कि वो डिजीज से वो क्या हो जाए, अपनी इम्यूनिटी डेवलप करें। यस। नेक्स्ट वन प्रमोटिंग डिलेड मैरिजेस अमंग गर्ल। डिलेड मैरिजेस अमंग गर्ल क्या होगी, तो इससे गर्ल चाइल्ड जो है वो पूरी तरह से एजुकेशन, प्रॉपर वे में एजुकेशन ले पाएगी, और प्लस जो है उसके अंदर ज्यादा अवेयरनेस डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट वन दैट इज मेकिंग फैमिली वेलफेयर पीपल सेंट्रेड प्रोग्राम। तो ऐसे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाना जो किसके वेलफेयर में हो, पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम मींस they are welfare towards the people. So these kind of family programs formulated by the national population policy. Now the next topic and the last one, that is NPP 2000 and adolescents. So what it means, that what are the measures taken in the NPP, National Population Policy 2000, regarding adolescent population? As we all know that adolescent population comprises 1/5 of the total population of India. So 1/5 of the total population of India, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट, 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो इतनी एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, तो वी हैव टू एटलीस्ट मेक सम स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर डेवलपमेंट। सो एनपीपी 2000 आइडेंटिफाइड एडोलेसेंट। एडोलेसेंट कौन सी पॉपुलेशन है, द पीपल अंडर द एज ऑफ 10 to 19 years, people in between age of 10 to 19 years. So that time adolescent population requires more nutrition than the adults and the child. So beside nutritional requirements, the policy puts greater emphasis on other important needs. Like, what are the other important needs? The first one, that is protection from unwanted pregnancies. That is also a part of adolescent population. And to stop or to prevent sexually transmitted disease, protection to against sexually transmitted disease, that is STDs. So कई तरह की चीजें जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई। नेक्स्ट वन दैट इज डिलेड मैरिज। डिलेड मैरिज होगी तो हमने पहले ही बात किया, डिलेड मैरिज होगा तो प्रॉपर एजुकेशन भी उसको मिल जाती है और प्रॉपर अवेयरनेस भी आ जाती है। और चाइल्ड बियरिंग, एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन को बिल्कुल एजुकेट करना रिगार्डिंग द अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज। कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज मीन्स, contraceptive services are those services which are provided to get protection against the STDs. STDs means sexually transmitted diseases. So making contraceptive services accessible. Accessible means possible to reach, and affordable, that is according to the economies, therefore that easily one can buy. एंड स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज को कैसे स्टॉप करना है, तो उसके लिए लीगल प्रोविजंस बनने चाहिए कि हाँ कहीं चाइल्ड मैरिज होता है, इन दैट केस क्या हो कि उसके अगेंस्ट लीगल प्रोविजंस हो। सो पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, अ वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड पोटेंशियल power. So this is all about this chapter, students. The NCRT solution of this chapter already uploaded on your drive. You can check the drive and do your NCRT questions in your notebook. Okay, students.